Well, preparation तो इतना कुछ हुआ नहीं है, but set पे I'd like to mention person who really helped me speak Marathi is man. I don't think he's here. Vikas is not here, but he's somebody who helped a little bit, in fact, a lot actually, in me speaking Marathi because I don't know how to speak so well. But I think the way he's made me talk in the film, I'd like to take his name and share the credit with him. Hi Rohit, I'm in center. Could you please stand up? Hi. Hi, I'm Urvi from Glamsham. What happened to Kajal Agarwal's character? Did it reincarnate as Kareena Kapoor in Singham Returns? Such a bad story it would have been. So what happened to her? You'll come to know, see the film. Since your entire team has been repeated, why not Kajal as well? No, Prakash Raj is also not there. Okay. Any other questions from the media? Yeah, my question to... Could you please stand up and introduce yourself? Hello, this is Shayoni from Rajshri Media. This way. My question is to Ajay, Kareena and Rohit also. Rohit, the question is, क्या ये South Indian film Singham 2 से जरा सा भी inspired है? बिल्कुल नहीं. I think जब हम लोगों ने South Indian film जब शुरू हुई थी 2, तो I think Rohit went and he heard the narration and he decided that we should not do that film. तो फिर हमने अपने हिसाब से रोहित ने अपना स्क्रिप्ट पे 2 साल काम किया and when we all were very happy and then we started this film. So nothing to do with. Sorry. My question to you is, शाहरुख ने अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पे आपके फिल्म को Question to who? Sorry. Question to you. Oh. शाहरुख ने अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पे आपके फिल्म को all the best कहा. Would you like to react on that? Yeah, I mean, I'm very thankful that he's done that, and I think ये जितनी problems जो छपती हैं और दिखाई जाती हैं सब मीडिया में, I don't know, there is no such problem. There's never been. So we all wish each other all the best, and we all work as one unit. My question to Kareena, would you like Saif to play a cop on screen ever, because he has not played somebody जो खाकी वर्दी पहनकर अजय देवगन या सलमान खान की तरह दबंग बन के on screen आए, तो would you like Saif to be like that? I think he'll make the best cop. He'll make a better cop than Ajay and Salman. Would you like to act with him on that film where Saif will play? No, I'm Bajirao Singham's love interest and his wife in real life, so it's fine. We'll keep it at that. हाय अजय और आपकी पूरी टीम से मेरा सवाल था. कल एक बॉलीवुड में काफ़ी दुखद खबर सामने आई, जोरा सहगल की वो नहीं रही हमारे बीच में, तो आप में से क्या रिएक्ट करें? आप लोग के एक रिएक्शन चाहिए. और अजय आप तो काम कर चुके थे उनके साथ. I don't know how to react. I mean, she's a great lady. और कल शाम को इनफैक्ट हमारा एक डिस्कशन भी हुआ कि should we postpone this event. तो I think it was too late. Otherwise, we would have postponed it also. करीना जी. Well, I've been a great fan, like all of us here, of Zora ji, and I mean, I think it's a complete loss. And she's a great artist, a great legend. We'll miss her, and I'm sure I didn't have the opportunity, but Karishma has, and Ranbir has worked with her in Savaria. So, but I'm sure that she's happy. She's lived a full life. So may her soul rest in peace. I think she lived a good life. I think we should remember that. More than that, she's not here with us. That's more important. और अजय, जैसा भी आप 2 मिनट पहले ही कह रहे थे कि कई सारी खबरें होती हैं जो कि मीडिया में आ जाती हैं, पता नहीं उसमें सच्चाई होती है कि नहीं होती है. वैसे एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा. अभी हाल ही में एक और खबर सामने आई कि आपके सेट पे, सिंघम 2 के सेट पे शाहरुख पहुंचे थे और आपसे मुलाकात की थी और करीना जी से. मैंने पराग को बोला था यही डिस्कशन होगा. मैं जीत गया ना शर्त, 500 रुपए हार गए. और आपको हक किया था. क्या कहेंगे, वो कितनी सच्चाई थी? जी वो सेट पे आए थे और आई थिंक रोहित से बात हुई थी उनकी और वो he was there and he dropped in on the set. तो आई थिंक कोई ऐसा बॉम्ब जाके पाकिस्तान में नहीं फोड़ा गया था. Rohit, are you instrumental in getting Shah Rukh and Ajay closer to each other? अलग से बात करेंगे. There are some winners from Radio Mirchi who would like to ask you some questions. Guys, put up your hands and ask the questions, please. Can we have the mic brought here, please?
Can somebody please hand her a mic? मनोज छाबड़िया देवास Please मध्य introduce प्रदेश yourself. रेडियो मिर्ची विनर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किससे असली पूछना जिंदगी चाहते में हैं? किससे पूछ रहे हैं आप सबसे अच्छा सभी से कि असली जिंदगी में भी आप उतने ही घर में लड़ाई झगड़े करते हैं जैसे हम लोग करते हैं जैसे आप लोग करते हैं जी आप लोग कैसे करते हैं पहले ये तो सभी से बताइए करते हैं हम बच्चों से करते हैं घर वाली से करते हैं माँ बाप से करते हैं आई थिंक झगड़े तो सभी के होते हैं इधर जब- इधर सर अजय सर हाँ तो झगड़े तो सभी के होते हैं जब साथ में रहते हैं तो झगड़े तो होंगे ही तो उतना वक्त निकल जाता है आपके पास झगड़े करने का जैसे हम निकल जाता आ, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वक्त निकल कितना- जाता होगा झगड़े करने का क्योंकि हमारे पास तो वक्त ही वक्त है सर आपके पास आप कोई काम नहीं करते नहीं इसके अलावा जो हाँ? काम करते हैं उसके अलावा हाँ तो हम भी जो काम घर- करते हैं घर- उसके अलावा वक्त मिल जाता है हमको झगड़ा करने का Okay, the next question, please. बैंक Yes, हॉलीडेज के Sam. दिन करते हैं Sam, I think you have a question for you, right? Yeah. Please introduce yourself. मेरा सवाल अजय से है अजय Please introduce yourself. या जितेंद्र कुमार एब्सोल्यूट इंडिया हाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको रियल लाइफ में कोई पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे मिले हैं जो बोले ये जो भ्रष्ट नेता हैं उनको फोड़ने का मौका मिले कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जरूर जो कि थोड़ा सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और ओपनली बात नहीं कर सकते और करना नहीं भी चाहते क्योंकि उनकी भी कुछ बंदिशें हैं बट हाँ उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली और सिर्फ नेताओं के बारे में नहीं ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे सिस्टम और सोसाइटी के बारे में है जिनसे उनको तकलीफ है I can see the lady out here with a mic. Please stand up and ask for your question. Okay, there's somebody out here who's been trying to ask a question for a bit. Meanwhile, Alok, why don't you ask a question? This question is for Kareena. Hi, Kareena. I'm Sasha from Hotyo.com. Since you spoke about, being, you had a very hectic schedule throughout the film, if you could kind of share, what kind of schedule you were up to and how did you kind of cope up with it, it'd be good. No, I think in fact we had lots of fun making the movie. It wasn't as hectic when you work with Rohit and his team. Even hecticness seems easy. That's, I think, his USP, that he kind of makes every possible thing look. It might, look really difficult, but the fact that, he and his entire team are there, it just makes everything really easy. So even if it was hectic, I completely enjoyed myself thoroughly. मेरा सवाल अजय सर से आपके राइट में सर सवाल मेरा यूं है कि एक सिंघम जैसा अगर पुलिस ऑफिसर हो तो उससे आप क्या चाहेंगे एज अ कॉमन मैन एक आम आदमी की तरह अगर अजय देवगन से कुछ कराना चाहें तो क्योंकि आमची मुंबई की बातें हो रही हैं महाराष्ट्र की बात हो रही है नहीं मैं वही चाहूँगा कि वो अपने दायरे में रह के सही काम करें और जो उनका काम है और जो उनका फ़र्ज़ है अगर ठीक से निभाएं तो और अगर सभी ऐसा काम करने लगे तो फिर आई थिंक 80% से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एंड करीना आपसे भी सवाल है मेरा कि जब आपको क्रोध आता है गुस्सा आता है या फिर सटकती है तो क्या करती हैं आप तब मैं बोलती हूँ अत्ता माजी सटक की And अगर आपको ऐसा ऑफिसर मिले असल जिंदगी में सिंघम जैसा तो उससे आप तो प्यार हो जाएगा नहीं, जैसे फिल्म में हुआ है उसके बाद मुंबई में ऐसे कौन से काम होंगे जो आप उनसे भ्रष्टाचार या वगैरह वगैरह व्हाटएवर I think of course corruption is the main. ये सिर्फ अपनी गली की प्रोटेक्शन कराएंगे कि मैं यहाँ रहती हूँ तो ये यहाँ देखते रहना कि सब ठीक है कि नहीं All right, the next question, please. Hi, Ajay. Here. Ajay, just a week after Singham returns, Mardani is releasing, and Rani Mukherjee is also playing a cop, and she has been your colleague. What do you have to say about? Did you see the trailer? And I haven't seen the trailer, but I'm sure it must be a good film, and it's not releasing on the same date, so I think I hope that film also does well. Okay, Kareena here. Kareena, there's a report that you are doing a Marathi number in this film. Is it true? What? Item number? Marathi item Marathi number? item number. Is it true? डाल There's देते a हैं. report. Marathi number of you. That's not true. Any other questions? Kareena, you're driving Lipika here. You're riding this thing, auto. Did you have to learn your lessons? Did I have to learn my lessons for what? For auto driving के लिए.
No, I'm a professional rickshaw driver now. Next film I'm going to shoot in a rickshaw. Really? I'm throwing my car now. Okay. The next question, please. Ajay, Yes. sir. Hi, Ajay. The last two questions. Yes, Abhimanyu, come. Ajay sir, this side. My question Abhimanyu is- from Radio Mirchi. Yeah. सर आपने कभी काउंट किया फिल्म में कि आपने कितने दरवाजे तोड़े और दया ने कितने तोड़े या आसान हुआ ये काम दरवाजे तोड़ने का बिकॉज यू हैव हिम इन योर फोर्स नहीं काउंट बिल्कुल नहीं किया हाँ दरवाजे ज्यादा दया नहीं तोड़े मैं सिर्फ दरवाजों में आया हूँ दरवाजों के थ्रू रोहित, आपने तो काउंट किया ही होगा ना because you were directing. How many takes to break? दरवाजे तोड़े 8 डायरेक्टर से पूछते हैं. 8 डायरेक्टर को भी बता रही हो प्रोडक्शन से पूछना पड़ेगा कि कितने की पेमेंट हुई है. All right, the last question. There's a gentleman here. Yes. This Oh, is there's a Rapi lady. from Rachi Entertainment. My question is to Ajay and Rohit. We believe that in the movie the issue of black money has been tackled. So how did you come about it, and did you come across any grave issues which are going on currently in the country? Can you get the mic closer? I mean, I didn't get your whole Yeah, we question. believe that in the movie the issue of black money has been tackled. So did you come across any grave, reality issues that are going on in the country? Not really. I mean, something what everybody knows and what we've been hearing on news and watching and the government trying to get the black money back and things like this. So we've followed the basics. We've not picked up any incident or tried to do anything of that sort. All right, the last question. This gentleman out here has been putting his hand up. The one with the spectacles. Prax, if I can. Yes, please. Okay. Hi, this is Sam from Radio Mirchi. My question is to Rohit. This side. रोहित, आपके मूवी में सबसे ज्यादा आपको किसने इम्प्रेस किया, आपके एक्टर्स ने या फिर एसयूवीज ने? That's the question I asked. पराग, ये भी मैंने पूछा था गाड़ी कितनी उड़ेगी. 2000 का नुकसान कर दिया मेरे पीआर का आप लोगों ने. Okay, there is one gentleman out here. Yes. Hi Ajay, I'm from Bollywood Life. This is Subramanian. I wanted to ask, now Shah Rukh is promoting your film in Twitter. I hope it does. Parag, 2500. I hope. Will you do the same for his film Happy New Year? I think his promo is being attached in our film, and that's what I said. कि इतना बड़ा issue क्या बना लेते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है. I mean, it's not an issue at all. He's made Happy New Year. उनका promo हमारी film में आ रहा है. He's wished all the best to us. हो गया बस सर हमारा काम हो गया. All right, that was the last question. Yeah, I would definitely wish best of luck, and I hope all films do well. And of course, I think we are all civilized people here. All right, that was the last question for the day. Thank you so much, guys. Put your hands together for this brilliant promo which we just saw. And this film, Reliance Entertainment presents Singham Returns, directed by Rohit Shetty and produced by Reliance Entertainment, Ajay Devgan Films, and Rohit Shetty Productions. Guys, there are refreshments in front of screen 1. Please do proceed there and have your refreshments.